Good morning, sir. Good morning. तो कोई एक आदमी बताओ तो न्यूरो में क्या पढ़ाई हो चुका है, क्या बाकी है? अंशु, सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? Yes, sir. न्यूरो में कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है? कोई बताएगा कि भूल गई सब? किसको याद भी है कि न्यूरोलॉजी का भी एक चैप्टर हुआ करता है एंड्रोमी में? हाँ? कोई बोल ही रहा था ना। अपडेट है। पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक। ठीक है। लोग तो हम ही पढ़ाते थे। चैप्टर वही पढ़ाते थे। आप वो कहाँ गई सुमन? Good morning, sir. 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 Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good Jai morning, sir. sir. Morning, sir. Very good morning. नाम सर। नाम सुमन को क्या बुला तो? Good morning, sir. क्लास चला जा सब यहाँ जल्दी से। मॉर्निंग सर। अरे ठीक है यार। जय हिंद सर। क्लास के बाद लूट लो एक आज। हाँ मॉर्निंग। कितना गुड मॉर्निंग? जैन सर। हाँ शुरू करते हैं, थोड़ा वेट करो, जाओ फिगर डायग्राम निकाल ले। लास्ट previous class have told about the development of face, is it? उस फेस से डेवलपमेंट ऑफ फेस में कुछ समझ में आया? No sir. Development of face. Now today I will tell you the development of palate. सर माइक्रोफोन लगाइए ना। माइक्रोफोन हेडफोन सर लगा लीजिए हेडफोन। अच्छा एक मिनट। एटी लगा लीजिए सर। बंसल मैक बंद कर। कान में कुछ लगाइए सर। आकाश बताओ क्या लगाना है सर को?
रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान देना। अरे नाम मत लो, रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों ठीक पढ़ रहा है कैमरा ऑन करके भाई बुक बंद कर। आवाज ज्यादा बढ़ रहा प्रतीक तुम फिजिक्स पढ़ रहा है? सब कोड वर्ड कर लो अच्छा अच्छा। आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर आवाज है? टनाटन। यस सर। टनाटन, चलो ठीक है। यस सर, क्लियर है। कह रहा टनाटन। अच्छा ठीक है। Now today I will start the development of palette. जैसे वेट कर लो उसका डायग्राम। First I will show the diagram of the palette, how the palette will develop. Do you remember about the development of face? Can I ask you? Hello? आवाज नहीं आ रही। अरे यार आवाज नहीं आ रही है कि तुम बताना नहीं चाह रहे हो? नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं है, आई विल टेल यू। कुछ तो याद रखो। Can you tell me when the face begin to develop? I mean, in which week of the embryonic life the face begin to develop? Do you remember? No. After teaching here, you must see the book also. Otherwise, it will not be fruitful to you. So after सर बुक हॉस्टल में छूट गया सर। वो बुक हॉस्टल बुक नहीं है। बुक हॉस्टल तो विदाउट बुक तो फिर सब ठीक तो याद नहीं रहेगा। बुक तो बुक इज मस्ट। तो फॉर रिवीजन द बुक इज मस्ट। 7 वीक होगा सर। अच्छा ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन बुक है ना। ई लर्निंग का तो तुम लोग पासवर्ड है, उसमें बुक होगा। हाँ ये लर्निंग वाला जो बोल रहे हैं सर तो हाँ। होगा, उससे पढ़ो। क्या कि किताब देखना पड़ेगा एक बार। किताब एक दो बार देखोगे तभी समझ में आएगी बात। Then you can understand well. Okay. अच्छा, what is estomodium? Do you remember? What is estomodium? ये खाली बता दो estomodium क्या होता है? What is estomodium? No. Depression opening for mouth and the pericardium in embryo. No, estomodium. I am asking you estomodium. I have told in previous class during the development of face, the first term that I have used the estomodium, because the changes occurring around the estomodium will give rise to the face. The 5 processes are the 2 mandibular, 2 maxillary, and 1 mandibular arch. These 5 processes develop and they unite and give rise to the face that I have told in the last class. Estomodium is a Estomodium is a ectodermal development, ectodermal depression from the cranial end or the cephalic end of the developing embryo. Is it? It is bonded on 4 sides, of which the one side is open. Cranially, this estomodium is depression is open, and superiorly it is bonded by the 4 brain vesicles. Below, yes. Hello. Nikalo. Just see the diagram, then it will be clear to you. Just wait. हाँ डायग्राम निकाल बड़ा मुश्किल है।
अब आ जाएगा। हाँ ये वाला, हाँ यही है। हाँ ये पढ़ाने तो थोड़े आएगा, इसे पे स्टॉप करोगे तब तो आएगा। हाँ आवाज जा रही होगी। हाँ now we see here this whole picture is showing the development of face, the palate, the cheek, everything that will give. So first you know about the stomodium. It is very important because it will help you to understand the development of face as well as the development of palate. So first you understand the stomodium. What is stomodium? Now in the last class also I have told you, but today I am again revising you. This is the stomodium, is it? This is the stomodium. Now in this figure, this is the cranial end of the embryo. This is the cranial end of the embryo. So the stomodium is a depression, ectodermal depression, where the crusher is there. This is the stomodium, is it? Now this stomodium, it is bounded above by the four brain vesicles. This is the four brain vesicles, is it? Now below it is bounded by the septum transversum and precardial sac, is it? Now caudally. Now here you will find a double layer structures, double membrane structure. This is called buccopharyngeal membrane. This is made up of two layer, the ectoderm and the endoderm. So this is caudally, it is bounded by the buccopharyngeal membrane. And cranially or at the cephalic end of the embryo, this stomodium is open. Here the one structure is arising, that is the frontonasal process. So here it is, I cannot show you. The last class I have already shown you that in the cranial end, where there is my cursor, is the open part of the stomodium. That will be the future opening of the mouth, is it? Now, today I will tell you the development of the palate. Now, the palate begins to develop in the 6th week of the intrauterine life. I mean, when the embryo is 6 weeks old, the development of palate begins. And the completion of development of the palate is in the 12th week of the embryo. When the embryo becomes the 12th week old, the completion of development of palate occurs, is it? Now in the case of face, we have seen that the face developed by the changes occurring around the stomodium, not within the stomodium. But here the palate will develop by the changes occurring within the stomodium. This is the, in this diagram, this is the, this whole picture is the stomodium. Here's the four brain vesicles, is it? Now this is the position of the precardial sac and the septum transversum. And here is the one layer of the buccopharyngeal membrane. And in this side, this is the opening of the stomodium. So these are the four sides of the stomodium, is it? Now what happens in the case of development of palate, the changes occurring within the stomodium, and these changes will give rise to the development of the palate. Now in the case of development of face, we have seen the development of frontonasal process. This is the frontonasal process. Now this frontonasal process is a double layer ectodermal outgrowth consisting of a core of mesoderm, is it? Now in the case of a development of palate, what happens from the inner aspect, this is the frontonasal process. So this is the inner aspect of the frontonasal process. This is the outer aspect. So from the inner aspect of the frontonasal process, an outgrowth, ectodermal outgrowth develops with a core of mesoderm, this one, this one, this one.
So this process is known as bucco-nasal process. So this is a fronto-nasal process. This is bucco-nasal process. So it is very clear to you that this bucco-nasal process develops from the fronto-nasal process. Is it clear? Then what happens? This bucco-nasal process grows towards the caudal end of the ostomium. That is towards the buccopharyngeal membrane. Is it? So what happens ultimately when this growth, that is the bucco-nasal process, comes to the buccopharyngeal membrane, what happens? This whole ostomium will be divided into two parts. The part above the bucco-nasal process and the part below the bucco-nasal process. So the part above, the part of the ostomium which lies above this bucco-nasal process is the part of the oropharynx, where this mouth will develop. This is the oral cavity, is it? Now the part below, where there is a cursor, this one, this is the part below the bucco-nasal process. So this structures, this part of the cavity will give rise to the nasal cavity. So what happens due to the changes or due to the development? थोड़ा सा ब्लाइट हो जाता तो अच्छा था. हाँ हाँ, बस इतना बढ़ा दो, ठीक है. यहाँ से हाँ, अब ठीक हुआ. इधर दे दो कर्सर. राइट, अब थोड़ा सा उसको समझ में भी बेटर आएगा. इसे थोड़ा डायग्राम छोटा था रहा. हाँ, इसको हटा, हाँ हटा दीजिए. ठीक. So what happens due to the development of this bucco-nasal process, this whole ostomium is divided into the oral cavity. This one, the oral cavity, and below the bucco-nasal process, this is the nasal cavity. Will give rise to the nasal aperture, and this one, this whole is the oral cavity, is it? Now when this bucco-nasal in this way, but later the stage of development, what happens? Actually the purpose of development of the palate is divide the ostomium into two parts, the oral cavity and the nasal cavity. But there should be a communication between the oral cavity, and the nasal cavity. But as I have told, this bucco-nasal process grows towards the this bidermal membrane, which consists of the ectoderm, the endoderm. Here, this one, buccopharyngeal membrane, is it? So when this process, nasal process reach here, what happens? It is completely shut off. But it should not be shut off. It should not be shut off because there should be a communication between the two cavity, the oral cavity and the nasal cavity, is it? So what happens? The caudal part, caudalmost part, this is the caudalmost part here. This is the caudalmost part of the bucco-nasal process undergoes dissolution. As a result, what happens? A big gap is produced. A big gap is developed. This one, a big gap is developed. Now, this big gap is known as primitive posterior nares. This is the primitive posterior nare, and this a small part, cranially a small part, is called the primitive palate. So this is the primitive palate. Sir, screen is not stable. Sir, diagram Screen is not stable. Diagram? What do you want? Screen is not stable, sir. Diagram?
डायग्राम फ्लक्चुएट कर रहा है सर। डायग्राम तो फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ लेकिन यहाँ नहीं कुछ दिखा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। जो दिखा रहा है वो दिख नहीं रहा। वो इस पे लैपटॉप पे स्क्रीन आ जा रहा है कभी। अच्छा अच्छा। अभी एकदम होम स्क्रीन आ रहा है तो वो पेन ड्राइव में भी है डाला हुआ। अच्छा ठीक है, ये पेन ड्राइव में है ना डाला हुआ। हाँ पेन ड्राइव निकालो, वही उसी से पढ़ा। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, लेट मी फ्यू मिनट्स, स्टे 2 मिनट्स, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। हाँ इसको क्लोज कर दो, मिनिमाइज कर दो। उस पर यू आर द बेस्ट सर। हाँ जस्ट वेट। इसको क्या करें, ये माइक्रोफोन को यहाँ का नाम कहाँ लगा। कभी इसलिए ना जब डेस्कटॉप आ रहा था मेरा कट जा रहा था, कभी कुछ हाँ पता नहीं है। तो यहाँ पर है लेकिन इसको ये करेंगे तब ना। सर ये कनेक्शन क्लोज कर दे सर। इसको क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज करना बच्चों। मिनिमाइज करना हो या एक मिनट सर, एक मिनट। फिर आपने दिक्कत तो इसमें मिनिमाइज, जूम मिनिमाइज नहीं हो रहा है। अब बताओ, यहाँ पर ये है ना, क्या करना है? पेन ड्राइव लेना है, पेन ड्राइव लगा दिए हो। हाँ यहाँ पे सेंड टू कर, ये है ना। हाँ सर। इसको ऐसे ही रहने दे सर। कहाँ पे है? हो गया सर, अपडेट है। कहाँ पे और है? हाँ? ये होता है। और क्या होता है? आप तो वाइट है, लाल कितना है? ये वाला। आवाज जा रही है तुम लोग को? अपनी आवाज जा रही है सर। आवाज जा रही है। यस यस ठीक है।
फिर न्यू शेड्यूल करना होगा सर, एंड मीटिंग करना होगा। एंड मीटिंग करो तो एंड मीटिंग करो किससे करते हैं, ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेना